Ladies and gentlemen, I request everyone to kindly settle down and take their seats. Namaskar, Sat Shri Akal, Adab. A very good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Sahib Jeet Kaur, and for this fine day, I will be a host on the behalf of Federation of Automobile Dealers Association, extending a very warm welcome to each and every one of you. Established in 1964, FADA is the apex national body of automobile retail industry in India that represents over 15,000 automobile dealers. Together, we employ over 4 million people at dealerships and service centers. Talking about today's theme, ladies and gentlemen, disruption is not a passing phase. Changing customer behavior and technological advances are driving auto industry convergence and bringing new competition, leading to shorter strategic shelf life and reduced margins. The auto retail is under intense pressure to respond decisively, to embrace digital and reinvent financial, business, and operating models. As auto dealers consider their new roles, disrupted value chains, they need to map the disruption landscape, assess threats, chart a new course, and gain new capabilities. And with this, I take immense pleasure and delight to welcome you all to FADA's third Auto Retail Conclave on the theme Thriving Through Disruption. One important announcement, ladies and gentlemen, in case of any emergencies, fire, or any natural calamity, I request everyone to kindly use the 6 fire exits. I shall allow you 30 to 40 seconds to kindly get familiar with the 6 fire exits in this hall. Thank you. And also, I would like to request everyone to kindly turn their mobile phones on the silent mode. I request everyone to kindly rise for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you. Well, honorable mentions to our special guest for the day, our chief guest, Dr. Mahendranath Pandey, Honorable Minister of Heavy Industry, Government of India. Guest of honor, Mr. Amitabh Kant, CEO, Niti Aayog. Our keynote speakers, Mr. Kenichi Ayukawa, SIAM President, Mr. Sanjay Kapoor, incoming President, ACMA. Office bearers of FADA India, Mr. Vinkesh Kolati, President FADA, Mr. Manish Raj Singhania, Vice President FADA, Mr. C.S. Vigneshwar, Secretary FADA, and Mr. Sai Girdhar, Treasurer FADA. Also, I would like to extend a very warm welcome to each and every one of you present here, ladies and gentlemen. With this, we move on, and I request gentlemen to kindly join us on the stage for the lamp lighting ceremony. I invite Dr. Mahendranath Pandey, Honorable Minister of Heavy Industries, Government of India, Mr. Sanjay Kapoor, Mr. Vinkesh Kolati, Mr. Manish Raj Singhania, Mr. C.S. Vigneshwar, and Mr. Sai Girdhar.
I request all of you to kindly take your seats on the stage, please. Ladies and gentlemen, our first speaker of the day is bound to no introduction. The man is the visionary behind the third Auto Retail Conclave and, of course, FADA. I welcome and invite Mr. Venkesh Gulati, President FADA, to kindly come up onto the dais and deliver the presidential address. Can we have a round of applause for the gentleman? Thank you, ma'am. Welcome everybody who are here physically and virtually also. It's a great day for us. After around approximately 2 years, we are meeting physically, and it's giving me an elated feeling of meeting my friends, Mantri ji and all the dignitaries in the house. So, आदरणीय भारी उद्योग मंत्री जी, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, नीति आयोग सीईओ मिस्टर अमिताभ कांत जी, SIAM President Mr. Kenichi Ayukawa, ACMA's incoming President Mr. Sanjay Kapoor, industry captains from the automobile and allied industries, all my dealer friends, and ladies and gentlemen who are watching this event live on our platforms. Namaskar, Shubh Madhyan, and good afternoon to you all. It's my privilege to welcome you all to the third edition of Auto Retail Conclave. Seeing the undying fighting spirit of our industry, this year's event theme has been aptly kept as thriving through disruptions. मैं सबसे पहले डॉक्टर पांडे जी का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप में आने और शामिल होने में हमारे निमंत्रण का स्वीकार किया. So I'm converting this to English also because there are a lot of dealers who have joined us from South and West who may not be comfortable in Hindi. So I would first like to thank Dr. Pandey ji for accepting our invite to come and attend this event in person. It is FADA's good fortune that you will be addressing to the entire auto industry for the first time as Heavy Industries Minister from our platform. Thank you, sir. Dr. Saab, the automobile retail trade and service industry comprises a vast network of automobile dealers engaged in the sale and service of two-wheeler, passenger cars, commercial vehicles, tractors, and construction equipments. We bridge the gap between the manufacturers and the retail customers. FADA represents around 8,500 dealers with over 15,000 dealerships and 26,500 outlets in India, right from the smallest taluka to the biggest city. The COVID-19 pandemic had a marked impact on the automobile industry, as in other industries also. When the first wave of the pandemic started subsiding, dealers scrambled to create an entirely new way of doing business, compliant with local health regulations that was safe for their employees and customers who simply needed to purchase vehicles or have them serviced. As the industry climbed out of the slump of the first wave, the second wave of COVID halted auto sales. But as they say, good habits are formed in bad times, and looking back, the auto dealership business has discovered a lot of good habits born out of necessity. A lower cost structure is a painful but a prudent habit. With lower inventory, less traditional advertising, and leaner overheads, the pandemic has given new opportunities and taught important lessons to manage finances and restructure the overall dealer business. Also, dealers and even OEMs have started realizing that the era of Taj Mahal-sized dealerships are over, and the same should now be transformed into a small cube-type showrooms nearer to the customer. FADA recently concluded its maiden dealer satisfaction study.
I must thank my colleague, Mr. C.S. Vigneshwar, Secretary FADA and Chairman for this DSS, for the stupendous response. We received a record number of responses which were well distributed across each geography, coupled with the right balance of urban and rural mix. FADA will conduct this study every year, and it is my sincere hope that automakers heed the lessons already learned during the pandemic, and more importantly, listen to what their first customers, we dealers, are telling them about the importance of transparency, flexibility, and fairness in the vehicle sales process. Honorable Minister, sir, your ministry gives permission to MNCs and other bodies such as auto OEMs to set up businesses in India. I am sure that with the Prime Minister Modi ji's initiative of Make in India, many more MNCs will be coming to India. Once they begin their journey, they appoint dealers as their long-term partners. It is their sudden exits which hampers both an entrepreneur's zeal to do business with them and the customers who are left high and dry with no proper support for after sales. This not only tarnishes our name in the society as we are the face of the brand, it also tarnishes brand India's value. Crore of rupees goes down the drain as it kills an entrepreneur's vision to get into business again. Sir, auto dealerships start from a small turnover of 5 crores and upward, with majority of dealerships being family-owned, small, mid-sized businesses and partnership firms and operating in each corner of the country. An entrepreneur invests his entire saving to get into auto trade business with a long-term horizon, but the agreement which he has to do with his principals are on some occasions on a yearly basis only. I'll humbly request that your ministry works on protection of auto dealers' right and hence create a sense of equilibrium in this industry since more and more international players are entering Indian auto market. Dr. Saab, auto retail employs over 45 lakh people, and that too without displacing them from their home locations. We provide opportunities to both skilled and unskilled employees via training institutes and continuously upskill people while they are on the job, including technical, diagnostic and mechanical training. It contributes rupees 95,000 crores in direct and indirect tax and other levies to the central and state exchequers. Its spin-off on insurance, finance and oil sectors need no overemphasis. The sector has a minimum setup cost of 1,50,000 crores with a 60,000 acres of own land with an investment of 2,25,000 crores. In fact, the auto retail sector is the largest sector in the country and every state's economy. The enormous size and potential of this segment of retail sector can be gauged with the fact that auto retail is 3 times the size of rest of organized retail. An industry status will get us better financing options since the sector is capital intensive in nature. There are various benefits of getting this status, such as priority lending from banks, external commercial borrowing, private equity investments, and so on. This will boost the confidence of the sector immensely and will result in scaling up of infrastructure, bringing in new investments. We therefore request you to kindly accord industry status to the auto retail sector. Minister Sir, India today has a passenger vehicle penetration of 22 cars per 1,000 individual. Comparing it to other global economies like New Zealand, it is 774, Australia 740, Canada 662, Japan 591, and even China 164 vehicles per 1,000. To even reach the levels of China that has done, India needs to add at least another 50,000 auto dealer outlets or more in the next 10 to 15 years, which will result in requirement of additional workforce employment by this sector to another tune of 1 crore. For all this, we request the government to back up our sector and support us wholeheartedly so that we in turn can become more Atmanirbhar and support our Prime Minister's vision of $5 trillion economy. Hence, to make the sector foster growth, we request you to take bold steps. Auto industry is the barometer of any country's economic performance. If the industry is doing good, the nation's economy is also flourishing. We request your good self to look at auto industry and especially auto dealership as one of the spokes in your wheel of growth. We assure you of our continuous contribution for inclusive growth of the economy and our nation.
We hence look forward to a serious consideration to our request and suggestions and due recognition as being one of the contributors towards our nation's past, current, and future progress. Thank you. Jai Hind. Thank you very much, sir. With this, ladies and gentlemen, we move on to the address by our guest of honor of the event. Please welcome Mr. Amitabh Kant, CEO, Niti Aayog. The gentleman shall be joining us virtually. Well, I believe he needs a round of applause, of course, even though he's not here. Can you hear me? Yes, we can, sir. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen, distinguished Minister. India is the world's largest two-wheeler, three-wheeler, and tractor manufacturer. We are the world's second largest bus manufacturer, third largest heavy truck manufacturer, and the fourth largest car manufacturer. Along with that, India has shown a phenomenal growth in the automobile sector, where it sold nearly 2.1 crore vehicles in financial year 2020. The overall industry, which accounts for 7.1% of India's GDP currently, is set to become the third largest in the world by 2026. In the post-COVID scenario, automobile sales have taken a dip of nearly 14% in financial year 21 compared to the previous year. The automobile industry is slated to bounce back to the initial growth rate as compared to 2019 within a short period of time. Automotive sales have soared in the month of July 2021 by 34% year-on-year basis. Also in the preceding month, two-wheeler sales have increased by 17%, three-wheeler by 22%, PV up by 43%, tractors up by 14%, and CV up by a whooping 236% year-on-year basis. India's auto sector is one of the largest employment, providing direct and indirect jobs to 3 crore people. A major chunk of the workforce is employed in the auto, retail, service and secondary market for vehicles. FADA India itself holds a vast network of automobile retailers employing about 4 million people at dealership and service centers. Presently, automobiles comprise nearly 50% of manufacturing in India. Growth of shared, connected and electric mobility presents a huge opportunity for India in terms of sustainability, job creation, and giving impetus to manufacturing through Make in India. Ladies and gentlemen, India is very critical to understand that as a key signatory of Paris Climate Agreement 2016, India is committed to reduce emission level by 25% by 2050. Road transport sector is one of the major contributors to CO2 emissions and accords 1/3 of the particulate matter emissions. The advent of electric vehicles has emerged as promising and intelligent solutions to achieve these ambitious targets. While the world is well poised to leapfrog to sustainable mobility, the contours of mobility landscape are constantly evolving. The domestic manufacturers of EVs have captured this opportunity to lead the disruptive change at full throttle and aim to secure a strategic position in the global value chain. While the shift from traditional combustion engine vehicles to EVs is inevitable, it is imperative for the nation to indigenize the manufacturing of EV and its component in alignment with the Make in India and promote mass adoption of EV in the domestic market. The number of startups registered in EV segment in the last few years is exponentially growing. Improving battery density and reduction in lithium-ion battery costs will steadily boost EV domestic and export market in India. To encourage the progressive introduction of reliable, affordable and market efficient electric and hybrid vehicles in the country,
The government has already formulated a scheme for faster adoption and manufacturing of electric and hybrid vehicles, FAME in India. Besides, the government is also realizing requirement of charging infrastructure to deal with issues like range anxiety and reliability of electric vehicles. Recently, in order to further fuel the demand and catapult the proliferation of EVs in the domestic market, the Government of India re-strategized FAME 2 with the objective to reduce the upfront cost of two-wheelers, three-wheelers and e-buses. The FAME 2 scheme now offers increased upfront incentives for two-wheelers, adopted aggregation model for three-wheelers, and OPEX model and lighthouse cities approach for electric buses. Another landmark initiative is production-linked incentive scheme for advanced chemistry cell battery storage of about 18,100 crore. Ladies and gentlemen, states are in the front seat to drive the transformative mobility. To further support the e-mobility ecosystem, around 22 states have come up with their state and EV policies. A wide gamut of other initiatives have been taken by the Government of India to provide impetus to the EV growth story. The rising rate of urbanization along with the demographic profile will be the driving force in the growth of the automobile industry. With urbanization, rapid increasing income, lack of good public transport and safety of women, there will be a perceptible inclination towards passenger cars, two-wheelers and three-wheelers. The scrapping policy is a first-of-a-kind institutional mechanism to deregister any vehicles. India has registered nearly 33 crore vehicles till now. Two-wheelers constitute the biggest chunk of all vehicles, accounting for about 75% of all vehicles, followed by cars, jeeps, taxis. Essentially, scrapping policy envisages to create a mechanism to retire end-of-life vehicles. As per Vahan database of Ministry of Road Transport and Highways, there are about 4.4 crore vehicles which do not have a valid fitness or registration certificate. These may be categorized as end-of-life vehicles and are ready for scrapping. Moreover, it is estimated that nearly 13 to 17 crore vehicles would reach their end of life in the next 10 years. At a macroeconomic level, this policy would be a game changer in terms of creating demand for newer vehicles. By way of retiring older vehicles would boost manufacturing on automobile sector by generating demand for new vehicles for the people. Ladies and gentlemen, upskilling, reskilling and constant skilling will help India in EV adoption faster. The collaborative effort of industry players and academics will help develop EV skills and transition into e-mobility faster. Traditional manufacturing jobs will move away, but new opportunities will be created in mechatronics, IoT, artificial intelligence, data science and more. Several IITs, such as the one in Delhi, Kharagpur, Roorkee, and other institutions, such as the University of Petroleum and Energy Studies, do provide course curriculum and research studies for electric vehicles. Ladies and gentlemen, the challenges can be overcome with concerted and cooperative action by all stakeholders. Niti Aayog and the Government of India will facilitate the process in the spirit of Make in India and Make for India. I urge all of you distinguished people to collaborate on this initiative, which will help India leapfrog to the future of mobility, which is common, convenient, congestion-free, clean, connected, charged and cutting edge as per the vision of the Honorable Prime Minister. With these few words, I thank you all. Thank you very much. It's been a real pleasure and a delight, and I'm delighted to be addressing you in front of the Honorable Minister, Dr. Mahendranath Pandey, and I thank you, Mr. Vikas Gulati, for giving me this opportunity. Thank you very much to all of you. Thank you. Thank you very much, Mr. Kant. Ladies and gentlemen, our next keynote speaker shall also be joining us virtually. Please welcome Mr. Kenichi Ayukawa, President, SIAM. Your Excellency, Dr. Mahendranath Pandey, Honorable Minister of Heavy Industry, and Your Excellency, Mr. Amitabh Kant, CEO, Niti Aayog, President Father, Mr. Vikesh Gulati, Vice President ATMA, Mr. Sanjay Kapoor, distinguished guests, ladies and gentlemen, Namaskar.
Thanks for inviting Siam for today's Auto Retail Conclave. We are fortunate to have the high-powered presence of Honorable Mr. Dr. Mahendra Nath Pandey and Mr. Amitabh Khan. Mr. Sir, we'll be eager to listen to your progressive view for the automobile industry. Dr. Pandey, we are aware that before this, you were leading the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. A large part of the employment and skill requirement of automobile industry happen in sales and service function carried out by the automobile dealers. Mr. Sir, your presence and guidance will help to enhance skilling and expand employment opportunity in the automobile sector. We already heard the view of Mr. Amitabh Khan. Mr. Amitabh Khan knows and understands our industry very deeply, and we benefit from his view. He stressed very much about transformation to electric vehicle. Related that scrappage policy, we have to review that. Thank you very much for your view. We are studying your comment. Ladies and gentlemen, this is the first time I'm addressing this forum of automobile dealers. First, as President Siam, and on behalf of all OEMs, I would like to thank each one of you for working together with the industry in this extremely challenging time. Together, we have taken several initiatives to reach to the customers, address their requirement for a new vehicle or after-sales support. In this new normal, we have jointly ensured that all COVID-19 safety measures are adequately implemented and followed across the countrywide dealer network. These safety measures have enabled us to provide a safe experience to our customer and ensure the safety of our colleagues. You have generated confidence in the mind of customers that they can purchase the vehicle or get it serviced while being safe from COVID. My heartfelt gratitude and compliment to all of you. To take this further, if dealers can vaccinate all your people first, customer confidence will increase to a new level. Dear dealer partners, today Indian automobile industry has made a mark on the global scale. You have been an equal partner in this journey of success. Today we have to take this industry further ahead. Let me share some specific message with you. First, it seems very simple and common, but it is very valuable. Let us focus on the customer. In our business, the entire value chain of distribution is from OEM to dealer to customer. In this chain, everything evolves around the customer. So, customer convenience, building end-to-end solution, ensuring customer satisfaction from sales to after sales, and repurchase. All these will remain central to our business. We need to innovate and align our processes, especially using technology to provide a safe environment to customers. My second message is about partnership. Ladies and gentlemen, I have been in the automobile business for almost 4 decades. I fully understand true customer delight and the business growth can be achieved only if the OEM and the dealer work together in an integrated manner. There are many areas where OEMs should share their best practice with their partners. Let me mention some.
people motivation, training, skilling, use of new technologies, financial management, especially working capital, customer-friendly processes. My request to my own colleagues across OEM is to kindly extend full support to our dealer community in these areas. When OEMs and the dealer work together as partners, only then it can be a win-win for all. My third message related to technology, ladies and gentlemen. As CM President, I want to assure you that OEM are fully committed to support you in driving automobile volume in the country. Today, with guidance and support from our progressive government, India is bracing for new regulation. Green fuel, EVs, and hybrid and other technologies for safety are all coming in near future. Please be assured that several fuel and powertrain port options are being explored by all OEMs. I am sure Indian customers will have access to a very vast range of options. All these will surely involve changes as a retailer and also. Please deeply understand this and be prepared to handle such variations which may have direct and indirect impact on your business. We must be conscious of the fact that India's car penetration is just under 30 vehicles per 1,000 people. This makes the growth opportunity to be extremely promising. Ladies and gentlemen, as President, Siam, I want to make a special mention of all the area where Siam is requesting the government for support to our dealer partners. One, we have requested the Reserve Bank of India to extend the moratorium for loans for our dealers. Siam has forwarded a copy of your request letter to the RBI for possible consideration. Two, we are happy and thankful that government has extended MSME status to dealers so that they can avail of the benefit. Third, we have requested Ministry of Road Transport and Highways to digitize the process at RTOs in all the states of India and keep the RTOs working so that customer delivery are not impacted in the lockdown period. Fourth, and also importantly, is related to fitness testing and vehicle scrappage scheme. Siam welcomes the government policy. We are requesting government that in the scrappage scheme, the dealer workshops should be allowed as inspection and certification centers. This is because the dealer organization already has equipment, investment, and expertise in testing and automobiles. Also, dealers are located close to the customer. If the government starts inspection center, such center may not be commercially viable and may take a long time across India. If the government accepts our request of using existing automobile dealers facility, it will be a big statement of trust by the government on automobile dealers. I hope automobile dealers realize this big responsibility. I also hope dealers will live up to this trust and carry out all inspection and certification with objectivity. We are all also requesting the government for starting the fitness testing much earlier in the life of a vehicle. The current 50 years or 20 years period appears too long. Similarly, if there are any such policy requests from further for business growth, please feel free to share your thoughts with Siam. Of course, it has to respect the spirit of competition in the best interest of the end customer.
ladies and gentlemen, we are going through unprecedented times. Such extraordinary challenges need an equally strong response. I'm confident that OEM and dealer will jointly put up an exceptional effort to meet this challenge and make India a winner. Thank you and I wish you good health. Namaskar. थैंक यू वेरी मच मिस्टर आयुकावा। देवियों सज्जनों, इसी के साथ हम आज के हमारे मुख्य अतिथि यानी कि माननीय मंत्री जी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे एक भारतीय मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे और इसी के साथ आई लाइक टू इनवाइट आवर नेक्स्ट स्पीकर। Please put your hands together as I invite Mr. Sanjay Kapoor, incoming President ACMA, to deliver his note. Thank you. It's the first time I'm standing and making an address after almost 2 years. Normally been sitting on Zoom. So, Dr. Mahendranath Pandey ji, Honorable Minister of Heavy Industries, Government of India, Mr. Amitabh Kant, Ayukawa-san, President Siam, Vinkesh, President FADA, Mr. Saharsh Damani, CEO, FADA. Change is constant. The automotive industry is on the cusp of a far-reaching change. We are witnessing disruption of the magnitude not seen in 100 years. Societal concerns around convenience, safety, and environment led to the decline of horse-drawn carriages in the early 20th century. The same three dimensions of humanity's anxiety are driving today's revolution in mobility. Tomorrow's car will be safer, take less personal time, and emit less or no exhaust fumes at all. The car of the not-so-distant future will undoubtedly be connected, autonomous, shared, and electrified. Ladies and gentlemen, a very good afternoon to you all. Let me begin by congratulating my friend Vinkesh for completion of a very successful first year of his term as president of FADA. You have undoubtedly led the association from the front in these unprecedented times and done us proud. And now, as you embark on the second year of your presidential term, I wish you great successful and an eventful year ahead. And when I say eventful, I mean that in a positive way only. Vinkesh, it is indeed very heartening to note that FADA today, under your able leadership, has emerged as a strong and effective voice of the vehicle dealers community. I also take this opportunity to congratulate the past presidents and leadership at FADA for their collective efforts over the years towards creating a credible institution that has well evolved into not only to withstand the challenges of times, but also created a place it rightfully deserves in the automotive ecosystem. Indeed, they say Rome wasn't built in a day. I'm extremely impressed by your outreach through the Everyday FADA newsletter, which is something that all associations must emulate. That apart, your monthly statistics is eagerly awaited by all of us in the components fraternity, giving us a first-hand feel of consumer pulse, without which our understanding of the automotive market would be incomplete. I would also like to thank FADA for the camaraderie that you have displayed in standing shoulder to shoulder with SIAM and ACMA in taking up the challenges that we as an industry are encountering in the face of the pandemic at all the relevant fora. I'm happy to note that our dealerships are now covered under the MSME Act, which will not only allow for the sector to avail various benefits accorded to the small enterprises, but will also hasten its evolution into a formal sector. I'd like to take this opportunity to address the Honorable Minister of Heavy Industry, Shri Mahendra Nath Pandey ji. Sir, at the outset, accept our heartiest congratulations on being appointed as our Minister. Congratulations are also due to both you and Mr. Amitabh Kant for the recent announcement of the PLI for battery ACC,
which is indeed a first step towards creating an ecosystem of electric mobility in the country. We now eagerly await the announcement of the PLI scheme for the automotive and auto component sector to create an export-led, globally competitive Indian automotive sector. Ladies and gentlemen, at this juncture, let me also give you a quick update on the performance of the auto component industry. As we all know, the entire industry is passing through unusually challenging times. The vehicle industry in India witnessed 2 successive years of degrowth of 14.6% in FY 19-20 and thereafter 13.6% in FY 2021. The economic slowdown of FY 19-20 was compounded by challenges of a pandemic-led national lockdown in 2021, resulting in a decline in vehicle production and consumption. While the first quarter of FY 2021 was a complete washout, the industry regained significant ground from the second quarter onwards. The component industry, in tandem, posted a subdued performance in FY 2021 with a degrowth of 3% over the previous year, registering a turnover of $45.9 billion, while our exports and imports stood at $13.3 billion and $13.8 billion, respectively, thus reducing the trade balance to $500 million, the lowest ever. Our exports declined by 8% and imports declined by 11%. In FY 21-22, we were once again confronted with another round of disruption in the first quarter due to the second wave of the pandemic. While this wave was much more severe of a humanitarian crisis, the lockdowns, however, were regional, in line with the government's ethos of lives and livelihoods, resulting in lesser adverse impact on the economy and production. With the economy progressively returning to normal as a vehicular demand picks up, we are cautiously optimistic about the performance of the industry this year. The challenges on the front of availability of semiconductors, escalating prices, as also availability of raw materials, challenges on the front of logistics, including non-availability of and high prices of containers, among others, continue to hinder smooth recovery. We're also wary of a third wave of the pandemic and hope that the current revival in demand will be a sustained one. We're optimistic that the lessons learned in managing the first two will stand us in good stead in the third one as well. I'm sure in these challenging times, our friends from the dealership fraternity must have suffered like all of us did. That apart, you must be dealing with challenges of vehicle sales going online and next generation vehicle manufacturers announcing that they may not need dealerships at all. However, life is about dealing with challenges and constantly evolving to adapt to the new environment, because only the fittest will survive. In addition to this, there are some extremely key factors that we need to keep in consideration while we look at our businesses today. The ability to be agile. Business models are changing, and we must accept this and be able to change with the times and disrupt the current business model to adapt to the new environment. The world is more digital now. A good example is this conference we're hosting today. The hybrid model works, and it works well because of the fact that we have adapted to the digital age. Partnerships that we never dreamt of before are now the new normal. Car companies partnering with mapping companies is just one example. And unlikely partnerships like these will become the norm. At the center of all this is the customer, and our approach to build a more customer-centric business is of utmost importance. The customer today is more demanding than ever before. In conclusion, revamping the in-person sales model and optimizing the customer car buying experience is the direction we must take. This will enable us to reduce the cost of car retail and therefore unleash the potential for considerable financial savings. We must pivot now to avoid perishing in the future. As I close, I once again wish you all good luck, not only for this event, but also for a strong revival of vehicle sales. A lot of our hopes are pinned on the performance of our friends in the dealerships. Thank you for having me, and I wish FADA great success in all its endeavors. Thank you.
Thank you very much, Mr. Kapoor, and especially for the words of motivation. देवियों सज्जनों, बात करना चाहेंगे आज के हमारे मुख्य अतिथि की। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो वर्ष 2014 से चंदौली संसदीय सीट के लोकसभा सदस्य हैं। वे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और इससे पहले पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने वर्ष 2016 से 2017 के बीच केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री के रूप में भी काम किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार बनी सरकार में वह मंत्रालय के सदस्य भी हैं। श्री महेंद्र नाथ पांडे जी का जन्म उत्तर प्रदेश के पखानपुर में एक ब्राह्मण परिवार में श्री सुधाकर पांडे जी और श्रीमती चंद्रावती पांडे जी के घर हुआ था। उन्होंने पत्रकारिता में डिग्री प्राप्त की है और साथ ही साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में पीएचडी भी पूरी की है। वर्ष 1973 में वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के महासचिव भी बने। वर्ष 1991 में श्री महेंद्र नाथ पांडे जी उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। कल्याण सिंह के नेतृत्व में बनी सरकार में उन्होंने आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। श्री महेंद्र नाथ पांडे जी ने इस्पात और खान मंत्रालय के लिए ग्रामीण विकास और सलाहकार समिति की स्थायी समिति के सदस्य में भी काम किया है। 5 जुलाई 2016 को श्री महेंद्र नाथ पांडे जी को मोदी सरकार के पहले कार्यालय में केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री के रूप में पद की शपथ दी गई। 17वीं लोकसभा के अंतर्गत प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माय सिंसियरेस्ट अपॉलजीज, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 31 मई 2019 को की गई कैबिनेट की घोषणा में श्री महेंद्र नाथ पांडे को कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री का पदभार भी दिया गया। 7 जुलाई 2021 को भारी उद्योग मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। And ladies and gentlemen, I believe everyone present here is familiar with FADA Digest. We are here to unveil the third edition of FADA Digest 2021. FADA Digest is a biennial publication and first edition was released in 2019. The digest brings to the fore FADA activities, articles from the movers and shakers of the auto industry, especially from the auto retail industry. इसी के साथ मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगी कि वो FADA डाइजेस्ट की अनवीलिंग करें। Also, I would like to request Mr. Saharsh Damni, CEO FADA, to kindly join us on the stage for the same. I request everyone present on the stage to kindly join in for the unveiling ceremony. Ladies and gentlemen, here I present to you the FADA Digest 2021. Thank you very much and congratulations to everyone. मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगी कि वो डाइस पर आएं और चंद शब्द कहें। FADA, Federation of Dealers Automobiles,
कि तीसरे कॉन्क्लेव के मौके पर आज उसके प्रेसिडेंट श्री वेंकटेश गुलाटी जी, अभी जो दो प्रतिष्ठित लोग हम लोगों से जुड़े वर्चुअली अभी जुड़े हुए हैं, नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत जी और शायम के प्रेसिडेंट सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री केनिची आयुकावा जी, और अभी हम जिनको सुन रहे थे एकमा के कल होने वाले प्रेसिडेंट मिस्टर संजय कपूर जी, ऐसा मुझे बताया गया। अन्य हमारे प्रतिष्ठित लोग जो सहर्ष दमानी, एस गिरधर, सी एस विघ्नेश्वर, अपने बीच कई अन्य सम्मानित लोग यहाँ हैं, मिस्टर आशीष एच काले, जॉन के पॉल, मिस्टर निकुंज सांगी, डॉक्टर एम पी सायम, श्री मनीष राज सिंघानिया और यहाँ अन्य सभी प्रतिष्ठित आमंत्रित बंधु और वर्चुअली देश भर में जुड़े हुए सभी इस एसोसिएशन, इस आयोजन से जुड़े सभी के प्रति मेरी तरफ से बहुत हृदय से सम्मान है। आज आप सबके बीच आके और जैसा मैंने सुना गुलाटी जी को, अमिताभ कांत जी को और अपने साइम के चेयरमैन को, अभी संजय जी की बात, बड़ी उत्साहवर्धक बातें आप सबने रखी। लगभग 15,000 जो आपके डीलर्स शिप के लोग हैं, 8,000 डीलर मालिक, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। आउटलेट मिला के आप लोग लगभग 26-27 हज़ार के तकरीब पहुंचते हैं। आप देश के अंदर एक बहुत बड़ा आपका योगदान है। आप 40,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 45,000 करोड़ को आप रोजगार देते हैं। भारत के अंदर आप जीएसटी के सफ़र तक आपका जो रिकॉर्ड है 95,095,000 से भी अधिक करोड़ का आप टैक्सेशन देते हैं। 95,000 करोड़ आप देश के एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। आपसे आज नरेंद्र मोदी जी के जो आज आपका मेन उनकी थीम देश को आगे ले जाने के जो कुछ उन्होंने मानदंड तय किए हैं, आप सब हिंदी में तो सहजता से समझते ही हैं, तो मैं उसी दृष्टि से अपनी बातें आप तक पहुंचाऊंगा। जो ये आप सब मैन्युफैक्चरिंग को बल देने का जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, कई फील्ड में उनके आत्मनिर्भर भारत का एस्पेक्ट में, भारत की सोसाइटी के जीवन स्तर को बेहतर करने के एस्पेक्ट में, देश को हर दृष्टि से सामर्थ्यवान बनाने के एस्पेक्ट में, कई दिशाओं में वो लगातार एक साथ इस देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और सफलताएं भी मिल रही हैं। आप सबका सहयोग भी है और लगातार सफलताएं मिल रही हैं। मजबूत देश के रूप में वर्तमान वैश्विक चुनौतियों में भारत बहुत तेज़ी से दुनिया में अपना स्थान श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में बना रहा है। उसमें आज का जो आपका सत्र है, पूरा आपका जो मेरे पास जितनी जानकारी मिली है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल 4.0 को केंद्रित करके और थ्राइविंग टू डिस्ट्रप्शन पर आधारित उस थीम पर आप ऑटो रिटेल कॉन्क्लेव को लेके चल रहे हैं। मेरी शुभकामना है इस दृष्टि से आप सबको। मैं मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में भारत आज एक अच्छी
और ख़ास करके ऑटो फील्ड में दुनिया में एक अच्छी प्रतिस्पर्धात्मक कंट्री के रूप में और लगभग कई दृष्टि से देश के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर के रूप में और कुछ दृष्टि में तीसरे चौथे पांचवें रूप में उभर रहा है। और उन सबके जो भार है वो आपके कंधों पर है, आपके योगदान से है। अभी हाल ही में जो कुशमन और वैकफील्ड 2021 की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के अनुसार भारत दुनिया में विनिर्माण में दूसरे सबसे अच्छे विकल्प के रूप में उभरा है। निसंदेह भारत के प्रधानमंत्री जो अर्थव्यवस्था को जिस तरह से एक कम्पिटिटिव पहल खड़ी कर रहे हैं उसमें आपका योगदान बहुत ही महत्व रखता है। और पीएम ने जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तमाम अनावश्यक कानूनों को ख़त्म करना, सरलीकरण करना कानूनों को, छोटे 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 और हजारों प्रकार के ऐसे कानून जिसका कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको और उस कानूनों का सहारा लेके सिस्टम के लोग आपको जगह जगह रुकावटें, उन सबको दूर करके आपको एक वित्तीय नीतियों में बदलाव करके और इन सब चीज़ों से इंडस्ट्री फील्ड के आप सब जो जुड़े लोग हैं उनको एक मैन्युफैक्चरिंग दृष्टि से एक मजबूत गवर्नमेंट सपोर्ट मिले और आप अपने कदम आगे बढ़ाएं, उस दिशा से हम सब काम कर रहे हैं। हमारा मंत्रालय भी उस दृष्टि से अपने को समर्पित भाव से, मेरा सौभाग्य है कि इसके पहले मैं स्किल से जुड़ा हुआ था। आज मैं चर्चा कर रहा था, जब मैं यहाँ आया संक्षिप्त बातचीत हुई, बीच में मैंने जो देखा आपके हर एक सेटअप के लोग स्किलिंग के फील्ड में भी अपना अच्छा योगदान कर रहे हैं, तो उसमें भी आप सब बेहतर पहले कर रहे हैं। अभी हमारे मंत्रालय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे भेल समेत कई पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज देश में टेक्नोलॉजी था ये मैन्युफैक्चरिंग दृष्टि से अपने योगदान को कई दशकों से दे रहे हैं। और हैवी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी इस दृष्टि से 2014 के बाद से ही एक नई दिशा में भी काम कर रहा है और इधर उसकी दिशा बढ़ाने के लिए कई पहले हुई हैं ग्रीन एनर्जी के फील्ड में, और उस पर हम सब अभी आप सबके सहयोग से और तेज़ी से आगे बढ़ना है। और इसमें मैं आपको आज की प्रेजेंस में मैं खास करके उसके लिए आपको इनवाइट भी करूंगा, आपको आग्रह भी करूंगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल के फील्ड में प्रोत्साहन की ज़रूरत है। और आज ये अमिताभ कांत जी अपने संबोधन में कुछ हल्का सा उस बात का जिक्र उन्होंने किया एडवांस केमिस्ट्री सेल का, उस दृष्टि से हम उस दिशा में भी शेष तकनीक को लागू करने के प्रयत्न में हैं। आप सबको मालूम है कि 1.5 लाख करोड़ की जो एक PLI स्कीम खास करके भारत के आत्मनिर्भर भारत के अभियान को और बेहतर गति, बेहतर एस्पेक्ट देने के लिए ये जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो प्रधानमंत्री जी ने, उसमें एक अहम रोल इस दृष्टि से हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल फील्ड में CC बैटरी सेल में लगभग 18,000 करोड़ से अधिक का वित्त परिव्यय की व्यवस्था हमारी सरकार ने किया। तो ये जो ऑटो सेक्टर हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह उभर रहा है और उसके सारे मजबूत हैंड्स जो आपका 3 सेटअप है, आपके मैन्युफैक्चरर्स, आपके डीलर्स और आपके कंपोनेंट सेक्टर के एकमा के लोग, ये 3 का कॉम्बिनेशन, ये जो त्रिवेणी है। और मेरे लिए बड़ा सुखद संयोग है कि मैं उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा हूँ, देश से जुड़ा हूँ, और आपके गुलाटी साहब वो त्रिवेणी के केंद्र प्रयागराज से जुड़े हैं, और ऐसे उनके संयोजन में और आप सबके बीच मुझे अपनी बात आपसे मिलने का, आपसे अपनी बातें शेयर करने का एक अवसर मिला। तो ये जो ऑटो फील्ड की जो ये त्रिवेणी है, ये 3 पर देश बहुत भरोसा रख रहा है और देश के बहुत बड़े पायदान आप हैं। ऑटो फील्ड के मैन्युफैक्चरर, ऑटो फील्ड के डीलर्स और उनके बीच की कड़ी कंपोनेंट्स से जुड़े हुए लोग, तो और सबकी यहाँ उपस्थिति है। मुझे जो जानकारी दी गई है, आपका 2-3 सेशन चलेगा, शाम को इसका आपका
समारोह है और वो भी एक अच्छी पहल के साथ है। तो मैं इस फील्ड में भी विशेषज्ञ आप हैं, मैं मिनिस्ट्री लीड कर रहा हूँ। मोदी जी के विजन को आप तक पहुँचाना, आपके सजेशंस को गवर्नमेंट सेटअप पर लाना और उसके अनुसार नीतियों में आवश्यक चीज़ों में पहल करना, ये मेरी जिम्मेवारी है। और उसमें जैसे आपने कुछ मेरे से चाय पर चर्चा में थोड़ी कुछ रिसेंट कठिनाइयाँ बताई, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। मैं उसको डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि चीज़ों को जब चर्चा करूँगा समझूंगा तो उस पर भी हमारी सरकार आपको आश्वस्त करती है कि देश हित में और आत्मनिर्भर भारत के अभियान में जो जरूरी होगा वो हमारी सरकार माननीय मोदी जी की अगुवाई में उनके मार्गदर्शन में करेगी। फेम इंडिया के अंतर्गत हम सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो सब्सिडी वगैरह दे रहे हैं, मैं आपको आह्वान करना चाहूँगा कि ऑटो सेक्टर में इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष फोकस आप करें, क्योंकि अब आपको जानकारी में है कि और लाल किले से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रीन एनर्जी पर फोकस किया, हाइड्रोजन में एनर्जी, हाइड्रोजन मिशन की घोषणा किया। ये सब चीज़ें जो मॉन्ट्रियल का जो एस्पेक्ट है, जो भारत ने वचन दिया है दुनिया को, और अन्य देश, बगल में हमारा एक पड़ोसी देश है, कहता कुछ है करता कुछ है, बड़ा सेटअप है, उस पर मैं टिप्पणी इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। लेकिन भारत जो भारत में कहता है, दुनिया में जो कहता है उसे करता है, और मोदी युग में ये करके दिखाया जा रहा है। इस नाते कार्बन उत्सर्जन घटाने की भारत की सार्थक पहल का ही परिणाम है कि आज सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हम देश के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े एक अग्रणी देश बनते जा रहे हैं, और वो साबित हो रहा है। तो आज उस दृष्टि से जो फेम इंडिया में हम लोगों ने स्वच्छ पर्यावरण अनुरूप जो ये मोबिलिटी की दृष्टि से आह्वान किया है, इन सब में आप सबके योगदान की और आप सबकी पहलों की, आपके सकारात्मक सहयोग की, और उसमें भी जो कठिनाइयाँ हैं, कई प्रकार की कठिनाइयाँ, और जो आप इंडस्ट्री 4.0 पर हमेशा फोकस करते हैं, R&D की, उसमें भी लेटेस्ट हर क्षण आवश्यकता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग, ये एक बड़ी समस्या है। इसमें कैसे समय को घटाया जा सके ताकि इसका आकर्षण बढ़ाया जा सके, उसकी फास्टनेस, उसकी ये, इन सब चीज़ों पर हमारा डिपार्टमेंट तो अपने जो सेटअप है उसमें काम कर ही रहा है, लेकिन आप भी उससे लिंकअप हैं और आप भी उसके वाहक हैं, आप भी उसको नीचे तक ले जाने वाले हैं। तो आप भी उसमें अपने को इन्वॉल्व करें, ये आग्रह करते हुए मैं, आप लोगों ने लगभग बहुत पुराना आपका ऑर्गेनाइजेशन है, 57 ईयर्स के आपके सफ़र में आपने देश को, हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ में जब थे, बहुत विद्यार्थी जीवन में, तो भारत के गांव, एम्बेसडर गांव में आ गई तो बहुत खुश हो जाते थे। ये अलग बात है, एम्बेसडर का अपना महत्व था, वो बंद हो गई, अब जो भी है वो अलग विषय है। लेकिन आज आप भारत के गांव तक एक से एक हाई क्वालिटी के 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, और गांव तक आप समझ लीजिए, गांव में भी प्रतिस्पर्धा रहती है। शहर के विकसित से विकसित जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वो चीज़ें यूज करते हैं मोटर व्हीकल्स, वो गांव वाला भी आज यूज करना चाहता है। उसके अंदर भी, क्योंकि ये टेलीविज़न के और संचार युग ने, मोबाइल युग ने आज हर चीज़ इजीली सबको उपलब्ध कराया, और हमारी सरकार ने संचार युग में स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी को, अटल जी के युग को याद करते हैं जो उन्होंने शुरू किया, आज मोदी जी के ज़माने में वो चीज़ें और नीचे तक डिटेलिंग में पहुंची है। तो वो जो प्रतिस्पर्धा है गांव तक, एक से एक नए दुनिया की सबसे लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज़ों तक गांव तक जाने का, तो उन सब के बीच तक आपने पहुंचाई है। 57 ईयर्स तक आप देश के शहरों से लेकर गांव तक देश को आज एक दुनिया की निगाह में, एक ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी एक बहुत सामर्थ्यवान, एक मजबूत, और इस दृष्टि से हम चाहेंगे कि भारत के अंदर जो भी सरकार की योजनाएं हैं, उस योजनाओं में जो आपके सेटअप है, उस सेटअप द्वारा आत्मनिर्भर भारत को आप सबसे ज़्यादा ताकत और सफलता देने का, अगर कुछ क्षेत्र हैं देश में, तो सबसे अग्रणी ऑटोमोबाइल क्षेत्र है जो भारत को आत्मनिर्भर दृष्टि से दुनिया में स्थापित कर सकता है। मैं इस दृष्टि से आप सबका आह्वान करूंगा। आपने बहुत अच्छे
आपका कनकलेव वार्षिक है। इसमें मैं अंत में आप सबके बीच में कई विषयों की चर्चा करने के साथ साथ जो ऑटोमेटिव मिशन प्लान 2016 से 2026 का 10 वर्षीय प्लान जो आदरणीय मोदी जी की सरकार आने के बाद आप सबके सहयोग से जो है उस ऑटोमेटिव मिशन प्लान को भी आप मेक इन इंडिया का मेन कॉन्सेप्ट बना करके आप विनिर्माण के क्षेत्र में एक अग्रणी लोगों में हैं। उस दृष्टि से भी आप सबको और लेटेस्ट से लेटेस्ट रिसर्च और भारत की सरकार की दिशा बिल्कुल स्पष्ट है। भारत सरकार कहीं दुविधा में नहीं है। पहले बाहर से सब चीज़ें आती थी, आज भी आए, कोई रोक नहीं, बहुत अवसर दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रोडक्शन इंडिया में हो और इंडियन कंपोनेंट उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो। यही आत्मनिर्भर भारत की थीम है। भारत की थीम केवल भारत के लिए आत्मनिर्भर की नहीं, मोदी जी की सरकार का विजन है भारत इस लेवल का आत्मनिर्भर कि अगर दुनिया में क्वालिटेटिव चैलेंज जो आ रहा है तो जो डंपिंग हो रही है बगल के एक बड़े देश द्वारा, उसकी जगह आपके बेहतर प्रोडक्ट को दुनिया एक्सेप्ट करे, ऐसा आत्मनिर्भर, ऐसा सामर्थ्यवान भारत बनाने की हमारी सरकार की दिशा है। उसमें आप सबसे अग्रणी प्लेयर बने, ये मैं आपसे आह्वान करूंगा। आज मुझे जानकारी दी गई कि आपके बीच में जो एक डीलर संतुष्टि का आप अवार्ड देने वाले हैं, ये मुझे जान के बड़ा अच्छा लगा कि अगर आपका डीलर्स संतुष्ट है तो जिसको डिलीवर किया गया है वो भी संतुष्ट होगा, और फिर ये दोनों की संतुष्टि यदि है तो आपका फील्ड वैसे ही आगे चमकेगा। मैं आप सबको, अभी आपने देखा कि आपको और एडवांस और आगे ले जाने के लिए हमारी सरकार ने, अभी मोदी जी ने लॉन्च किया स्क्रैप्स पॉलिसी पर भी बहुत बड़े कदम उठाए हैं, जिससे कि ये गाड़ियों के नएपन की तरफ। तो आज मोदी जी का इस दृष्टि से जो विज़न है, इस विज़न में स्क्रैप्स पॉलिसी, नई सीएमवी रूल्स और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इन तीनों पर एक बार बल देते हुए हमारा मंत्रालय आपके साथ पूरी शुभकामना के साथ खड़ा है। आपके इस आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने यहाँ आप सबको मिलने का जो अवसर दिया है, बातचीत करने का अवसर दिया है, हमें कुछ समझने का और हमें कुछ जानने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। हम सब मिलते रहेंगे और मिल करके देश को आगे ले जाने की हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की जो दृष्टि है उस पर हम सब आगे ले जाएंगे। और दुनिया में इस कोरोना जैसी कठिनाई में भी आपके सेक्टर, आपके प्रोडक्ट ने और आपकी सक्रियताओं ने जहां भारत की वित्तीय स्थिति को भी मजबूत किया है इस कठिन काल में, और आपके बनाए उन वाहनों से और आपके वितरित किए गए वाहनों से आज वो सब चीज़ें बेहतर न रहती तो इस कठिन समय में 135 करोड़ के देश को अन्न, दवा, कोरोना से संबंधित विषय पहुंचाने में कितनी कठिनाई होती। और मैं एक एक के बारे में नहीं जानना चाहूँगा, लेकिन मुझे पता है आप लोगों ने कोरोना की पहली लहर की कठिनाई, दूसरी लहर में भी अपनी सोसाइटी के प्रति जो आपका कर्तव्य है वो भी अच्छी तरह से निभाया है। उसके लिए आपके संगठन का, आपसे जुड़े लोगों का मैं अपनी ओर से साधुवाद देता हूं, उनको अभिनंदन प्रदान करता हूं। और आगे भी इस कठिन समय में जो समाज के प्रति कर्तव्य है उसमें आप सब का आह्वान करता हूं, उसमें भी जुड़े रहें। आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम आई लाइक टू थैंक our all keynote speakers for taking out time from their busy schedules and gracing the occasion with their presence. I'd like to request our FADA office bearers to kindly felicitate our chief guest, Dr. Mahendra Nath Pandey, Honorable Minister of Heavy Industries, Government of India.
I'd like to also request our office bearers to kindly felicitate Mr. Sanjay Kapoor, incoming President ACMA. I request everyone to kindly step forward for the pictures, please. Ladies and gentlemen, can we have a round of applause? And of course, the felicitation mementos for Mr. Kant and Mr. Ayukawa shall be delivered to them. Thank you very much. I request Mr. Manish Raj Singhania, Vice President FADA, to kindly present the vote of thanks. Hello everyone. Very good, I think very highlighted evening by our Honorable Chief Guest, Dr. Mahendranath Pandey, and by very eminent speakers. First, I would like to thank Mr. Amitabh Kant, CEO Niti Aayog. Thank you, sir, for highlighting the huge potential of automobile sector, electric vehicle, importance of scrappage policy and the benefits that it will give to the auto sector, and the promise that auto sector has for India and its development. Secondly, we would like to thank Mr. Kenji Ayukawa, President SIAM. Thank you, sir, for recognizing the role of automobile dealers in attending to consumer requirements during COVID times. We were the front forces and we came out first in the open to attend to the customers, even though the COVID was ravaging all across India. Tough times, the frontline staff stood in the front and faced the customer issues and problems, serviced their vehicles, serviced government vehicles so that they could provide efficient service and effective service to wherever they were deployed. Your request to the Honorable Minister in the interest of industry would be very, if the Minister attends to it, it would be hugely beneficial for the industry, and we will be taking up the issue on FADA front as well. As suggested by you, sir, FADA as an association will regularly engage with SIAM for the betterment and effective working of the automobile industry. Thank you once again. I would also like to thank Mr. Sanjay Kapoor, who's here with us physically. Thank you, Mr. Kapoor, for recognizing FADA as a force to reckon with and appreciated, and you vocally appreciated the various efforts and initiatives that FADA has taken. His insights to the future of auto retail, electrification, and the requirement of heavy investment capital, role of ACMA in the development of the automobile industry, importance of dealers were very insightful, and this audience has hugely gained from it. अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी का, जिन्होंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के बारे में अपने विचार शेयर किए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि मेक इन इंडिया एक बहुत सफल योजना हो। आज काफ़ी सारे सामान जो है हमारे देश में डंप होता है, वो डंपिंग बंद होना चाहिए और हमारा देश जो है ये सब चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करे और मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ डोमेस्टिक में सप्लाई करे और एक्सपोर्ट भी करे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और इससे ऑटो इंडस्ट्री को बहुत बड़ी बेनिफिट होगी। ऑटोमोबाइल डीलर्स भी साथ में काफ़ी बेनिफिट पाएंगे। आज देख रहे हैं सेमीकंडक्टर बाहर से सामान आ रहा है, जिसके कारण एक छोटे से और मामूली से पार्ट के कारण आज गाड़ियां नहीं बन पा रही हैं, महंगी महंगी गाड़ियां प्लांट पे रुक गई हैं। अगर यही सेमीकंडक्टर इंडिया में बनता तो डेफिनेटली आज हमारा प्रोडक्शन इतना स्लो डाउन नहीं होता, कस्टमर को हम एड्रेस कर सकते, उनकी डिमांड को हम पूर्ण कर पाते। आपने
ऑटोमोबाइल के तीनों अंग FADA, SIAM और ECMA को एक ताकत के रूप में माना और आप उनकी इम्पोर्टेंस को आपने समझा, हम उसका धन्यवाद देते हैं। और सर, आपने इस फिजिकल इवेंट में आके, हम बहुत लिमिटेड रखे थे सर, ऑनलाइन भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, सब आपको देखे, आपको सुने हैं और आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपके आशीर्वाद एवं आशीष वचन हमारे को FADA को दिया, जिसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम आपसे एज एन एसोसिएशन आपसे रेगुलर संपर्क बना के रखेंगे और लगातार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आने वाली समस्याओं को लेकर आपसे मिलते रहेंगे और हम आपके कुशल नेतृत्व में चाहते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बेनिफिट पाए और आगे ग्रोथ करे। मैं पुनः आप सभी डीलर जो यहाँ फिजिकली आए एंड ऑल द डीलर्स that are connected virtually, I personally thank all of them. I thank on behalf of FADA and thank you very much for making this event a huge success. Thank you. Thank you very much, Mr. Singhania. Ladies and gentlemen, with this we come to an end of the inaugural session. Thank you very much, gentlemen.